Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great in life. So today we are discussing about how to price your services if you're running a social media marketing agency. And for that matter, if you're running any kind of agency, be it advertising, marketing, these tips are easily applicable to all the businesses. In this video, we are not just going to learn how to create strategies for pricing your services, but also the challenges that you will face while pricing them. We'll also understand why it is so important to price your services. So let's get started with today's topic. Let us first discuss why it is so important to price your services in a right way. Are you going to make profits if you price your services in a certain way? Factor to be taken into consideration is perceived value of your services. What kind of services are you offering? If you're going to charge really high, that means you're serving premium services. If you're going to charge low, that means your services are affordable. Now that you know the importance of pricing your services, we are good to go. We are good to create a strategy for pricing our services. But wait, what about the challenges that we can face while creating those strategies? We haven't discussed that. Let's first discuss that. The number one challenge is competitive pressure. Market is already saturated. There is going to be tech war. There is going to be price war. There is going to be client poaching. They are going to target your clients. You are going to target their clients. You would want all their clients. There is going to be a lot of pressure built on you because obviously you're fairly new. How are you going to handle that pressure and how are you going to stay relevant? Second point is justifying your high prices. How are you going to justify your high prices? Let's suppose you're selling premium services. How are you going to justify that? You are new in the industry. There is lack of awareness about the brand. There are trust issues. There are clients who are price sensitive, who have budget constraints. How are you going to deal with them? You have to come up with a plan. Third challenge is to maintain a balance. You are going to serve different clients. Different clients would have different needs. Your challenge would be to maintain the balance. Next challenge is customization of services. We have already discussed how difficult it is to justify the high prices, but given that if there is a need to do that, how are you going to customize your services? Because obviously you cannot reduce the prices, then you have to customize your services. Do you have any strategy for that? You know that market trends keep on changing. So what would be your strategy for that? Next challenge is client education. How important it is to educate the client. But what are the constraints? Client doesn't have time, so there are time constraints and it's a time consuming process, right? Social media is very complex. The algorithm keeps changing and you have to make them understand since there is lack of awareness. You will have a lot of preconceived notions to break. So obviously it's going to be a lot of work. And there are profit margin concerns. Are you going to make profit if you price your services in a certain way? What about client acquisition? How are you going to acquire the clients? And if you price your services at high amount, would you be able to acquire or retain the clients? How about the cost associated with running the services? How are you going to cover all of these costs? Next is value-based pricing. An agency would charge a client based on the value they provide to the client. For example, I'm also a course creator. I create courses, like I write the script of the entire course and film it. So I also charge companies like that. And maybe if it's a very good company, there are lots of students, buying the courses. The companies would generally ask me like, how much would I take home? So I just say, I just want the royalty. But that only works if the company has a good repo. Like I said, if they're popular, if I know that the leads would be coming in. But if you think that they're fairly new, it's not the right thing to do, then you can just charge fixed amount of money for those 3 or 6 months, whatever time you're producing content for them. Similar is the case in performance based pricing. What happens is let's suppose you're doing performance marketing. If you're bringing X amount of leads, so you will charge based on the performance you're doing. Next comes tier pricing. Agency would provide services to client at different pricing structure. For example, an agency is providing 3 different packages. One is basic, second is standard, and third is premium. So they will charge different prices and they will package their services like that. In the basic one, they will just give the basic knowledge. In the second one, like standard and premium one, they will provide the advanced features. So they will do the packaging like that.
नेक्स्ट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, जैसे एजेंसी वुड टेल द क्लाइंट कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एड्स रन करने के लिए हमें इतना बजट चाहिए, सो ऑब्वियसली दिस अमाउंट ऑफ मनी वुड बी रिक्वायर टू रन द एड्स, एंड देन उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेते हो। तो 2 मंथ्स के लिए आप उनसे थोड़ा कम चार्ज कर सकते हो, देन थर्ड मंथ से आप उनको एज दे स्टार्ट ग्रोइंग, एज दे स्टार्ट गेटिंग लीड्स, देन यू कैन इंक्रीज दैट प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट इज कंपेटिटिव प्राइसिंग। अब इसमें क्या होगा, आप अपने कंपेटिटर्स को देखोगे वो क्या चार्ज कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा परसेंटेज नीचे आप चार्ज करेंगे अपने ऑडियंस से, जस्ट टू अट्रैक्ट द कॉस्ट कॉन्शियस क्लाइंट्स। नेक्स्ट इज बंडल प्राइसिंग। अब यू वुड गेट कन्फ्यूज बिटवीन बंडल प्राइसिंग एंड टियर्ड प्राइसिंग। अब इसमें क्या होता है, बंडल प्राइसिंग में जो एजेंसी है वो खुद से बंडल करती है प्राइसेस, इस तरीके से पैकेज बनाती है, रादर देन क्लाइंट इंडिविजुअली उसे बाय करे, वो बंडल में बाय करते हैं। इट्स अ ग्रेट वे टू अपसेल द सर्विसेज ऑल्सो। अब ये टियर्ड प्राइसिंग से कैसे डिफरेंट है, टियर्ड प्राइसिंग में क्या था, उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, उसमें एजेंसी ने बता दिया कि ये बेसिक में है, ये स्टैंडर्ड में है, ये प्रीमियम में है, आपको खरीदना है तो आप खरीदो। बंडल प्राइसिंग में क्या होगा, आप सर्विसेज उस बंडल के अंदर डलवा सकते हैं, डन टू सिंप्लीफाई योर डिसीजन मेकिंग। बट टियर प्राइसिंग में थोड़ा सा क्लाइंट कंफ्यूज होता है कि बेसिक ले या एडवांस ले। बेसिक में आपको कम फीचर्स मिलेंगे, एडवांस में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। बट यहाँ पे बंडल प्राइसिंग में इट्स नॉट लाइक दैट। बंडल प्राइसिंग में सर्टेन सर्विसेज होती हैं तो उसमें सिर्फ एड ऑन होता है, अगर एडवांस आपको दे रहे हैं तो उसमें 2-3 सर्विस हटा देंगे जो आपको नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, कस्टम कोड्स। अब इसमें क्या होगा, जैसे लेट्स सपोज आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, पर्सनलाइज अप्रोच चाहिए जिसको, लेट्स सपोज कोई क्लाइंट आता है, उसको वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कराना है, उन्हें वेबसाइट डेवलप करानी है, तो 2 क्लाइंट्स हैं, एक्स और जी। तो एक्स क्लाइंट को कुछ उनकी स्पेसिफिक नीड्स है और जो जी है उनकी अलग नीड्स हैं। तो आप उनके नीड्स और प्रेफरेंसेस को देखते हुए, उनके बजट को देखते हुए आप अपनी जो सर्विस है उसको प्राइस कर सकते हो। तो कस्टम कोड्स आप क्रिएट कर सकते हो फॉर डिफरेंट नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज कंसल्टेशन फी। जैसे कोई एक नए क्लाइंट है, उनको सर्विस लेनी है, बट दे फर्स्ट दे वांट टू सी माय अप्रोच, सो 1 आवर कॉल होता है, वो कंसल्टेशन कॉल के चार्जेस होते हैं बिफोर दे प्रोसीड विद द सर्विसेज। उनको थोड़ा जिस्ट मिल जाता है कि कैसे हम काम करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कंसल्टेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज डिस्काउंट्स एंड प्रमोशंस। दिस इज ऑफन मिसअंडरस्टूड। अगर आपको एक नया क्लाइंट लेके आना है अपने बिजनेस में, एक एजेंसी को, तो वो इनिशियली थोड़े टाइम के लिए डिस्काउंट्स एंड प्रमोशंस दे सकते हैं, बट वो डिस्काउंट्स एंड प्रमोशंस देने का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको लंबे टाइम तक देते जा रहे हैं, बिकॉज दिस वे यू आर ओनली गोइंग टू रिड्यूस दैट रेपो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज इनिशियल फेज में आप उनको दीजिए ताकि आप उन्हें एनकरेज करें एडिशनल सर्विसेज खरीदने के लिए। वंस दे डेवलप दैट ट्रस्ट इन यू, they will definitely buy, but वो थोड़े टाइम के लिए होना चाहिए। This strategy also works to reduce the resistance. नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज क्रिएटिंग लॉयल्टी प्रोग्राम्स। आपके बहुत सारे ऐसे लॉयल क्लाइंट्स भी होंगे जो लंबे टाइम से आपकी सर्विसेज ले रहे हैं, तो उनके लिए आप रिवॉर्ड सिस्टम सेट कर सकते हैं। देन कम्स नेगोशिएशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अब काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं ना, जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, बट देन आपको नेगोशिएट करना पड़ता है। दीज आर हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स। अब इसमें क्या करना होगा, आपको ऐसा कॉमन ग्राउंड चूज़ करना होगा जहाँ पे दोनों के लिए वो चीज़ ठीक रहे। सो बी लिटिल फ्लेक्सिबल विद योर अप्रोच। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप आफ्टर द मीटिंग। इट शोज योर अकाउंटेबिलिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेट फॉर फॉर्मिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। These were all the pricing strategies that I personally know, but you have to periodically review all these pricing strategies. ऐसा नहीं है कि one time plan होता है ये, it depends on the changing market situation, market dynamics क्या है और टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व कर रहा है, तो उसके बेसिस पे ही आपको आपकी जो सर्विसेज हैं उनको प्राइस करना चाहिए। So that's all in this video. Thank you so much. See you in the next video.